Jai Hind everyone, myself Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today I am going to discuss about a topic that is known as bus structure and bus arbitration. This particular topic is from the subject computer organization and architecture, which is a very good particular good topic in this particular subject. Bus structure and bus arbitration, these are the most important topic in particular to your university exam as well as the GATE exam. Let's go through the first thing, that is bus structure. This is basically a bus structure, simple bus structure, in which we consist of processor, memory, input-output devices. All these are the basic component of computer, and all these components are connected with a system bus, which is known as a particular lines that is used to control the overall processing of the computer. This system bus consisting of three things, that is a control bus, data bus, address bus. As per the name, the control bus is basically used to control the data, to control the flow of data. That is, sometimes input-output devices want processor. They request, input-output device request the data from the processor. Then this control bus is usually responsible to transfer the data from input-output devices to the processor. The second one is the data bus. All the data is basically traveled from through the data bus. This data bus is mainly used to transfer the data from one device to the other device. The last thing is the address bus. This bus is basically used to transfer the address from processor to the input-output device, from processor to the memory. So next, we are getting go through the single bus structure. Mainly bus architecture, or we can say that structure is different kind of thing. Single bus structure. If we're talking about a single bus structure, in this we have a single bus which is connected to the input, output, memory, processor. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने डायरेक्शंस जो लिए हैं वो डिफरेंट हैं. Processor and bus system have bidirectional. The bidirection means processor बस को रिक्वेस्ट भेज भी सकता है, रिक्वेस्ट ले भी सकता है, डेटा भेज सकता है, डेटा ले सकता है, एड्रेस भेजता है, एड्रेस लेता है. मेमोरी का भी यही रिस्पॉन्स है, इट इज ऑल्सो इन बाइडायरेक्शनल. दैट इज, ये डेटा बस भी यूज कर सकता है, ये एड्रेस बस भी यूज कर सकता है, ये रजिस्टर बस, कंट्रोल बस भी यूज करता है. आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इज अ यूनिडायरेक्शनल. ये डेटा बस के थ्रू हमेशा क्या करेगा, इनपुट लेगा. ये एड्रेस बस के थ्रू क्या करेगा, हमेशा इनपुट लेगा. इनपुट की अगर मैं बात करता हूं तो इनपुट इज ऑल्सो अ यूनिडायरेक्शनल. दैट इज, ये हमेशा क्या करेगा, इनपुट लेगा. नाउ अगर मैं सिंगल बस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, इफ यू टॉकिंग अबाउट द सिंगल बस स्ट्रक्चर, देयर विल बी अ प्रोपगेशन डिले. व्हाई? वी हैव ओनली यूज अ सिंगल बस. थ्रू दिस, इफ लेट्स सपोज, यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं कई सारे इनपुट्स को या ऑपरेशंस को बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, बेसिकली यहां पर एक डिले तैयार हो जाएगा, क्योंकि कई सारे रिक्वेस्टेस एक साथ आ रहे होते हैं. तो सारे के सारे रिक्वेस्टेस को अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूं तो वो मैं नहीं कर सकता. इस वजह से यहां पे प्रोपगेशन डिले मिलेगा. दिस बस स्ट्रक्चर हैव द लिमिटेड कैपेसिटी. लिमिटेड कैपेसिटी, व्हाई? वी कैन नॉट add the different devices in this particular bus structure, and that is why it faces a bottleneck problem. Now, what is bottleneck problem? Have you seen a bottle, a Pepsi bottle that contains this particular amount of size? अगर मैं उसमें से कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाता है, वो अटक जाता है. That is why it have bottleneck problem. Then we talking about multiple bus structure. This is a second bus architecture. In this,
we have system bus, the high speed bus and the expansion bus. The system bus mainly accesses use processor, cache memory, main memory, local input output controller. सिस्टम बस के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर, कैशे मेमोरी, लोकल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर और मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं। जबकि हम हाई स्पीड बस की अगर बात कर रहे हैं तो हाई स्पीड बस में हम SCSI P1394 graphic card, video, LAN, all these things are used, all these things can transfer the data using high speed bus. बिकॉज अगर ग्राफिक की बात करते हैं तो ग्राफिक में क्या है, ग्राफिक में हम लोग गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। गेमिंग करने के लिए हमें क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट, गेमिंग करने के लिए हमें हाई स्पीड बस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे को वहां पे क्लॉक स्पीड जो चाहिए मेरे कंप्यूटर की वो मुझे ज्यादा चाहिए। दैट इज वाई वी यूज हाई स्पीड बस। देन वी यूज अ एक्सपेंशन बस। In this expansion bus, we use network, fax, expansion bus interface, modem, serials. So then multiple bus structure consists of different bus, system bus. And all these system bus have different properties. All these bus systems have different speed. That is why multiple bus structure have fast accessing, have high performance and scalable. Now let's talk about some control commands which is used in particular to operate the micro operations in ALU. If we want to read the memory, we use MR command. If we want to write, then we use MW command. If we want to read input output, then IOR command is used. If we use IO write, input output write operation, then IOW. If we use bus request, if we want to request to the bus, then we use BR command. If we want to grant the request, that is bus grant. If we want to interrupt the request, INTR command is used. If we want to acknowledge the interrupt request, then we have to use INTA, that is used to acknowledge that we interrupt the request. And CLK clock command is used to analyze how much time, how much data can cost a particular time. Let's go to the bus arbitration. If we're talking about bus arbitration, it refers to the process by which the current bus master access and then leave the control of the bus and passes to the another bus requesting processor unit. Bus arbitration is nothing, just like if we want to take some processing process and we generate a request, then there is a person called bus arbiter. He is responsible for giving us the request, giving us the particular response. Then if that bus master is not free, then it will not give particular response. So that is why we use bus arbitration. मेनली अगर मैं बस आर्बिट्रेशन की अगर बात करता हूं तो बस आर्बिट्रेशन को मैं उस जगह पे यूज कर रहा हूं या इस केस में यूज कर रहा हूं कि अगर मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं और वो रिक्वेस्ट मेरी फुलफिल मैं करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। अब सामने वाला बंदा या जो भी मेरे पास बस स्ट्रक्चर है या जो भी मेरी बस लाइंस है वो अगर बिजी रही, उनके पास टाइम नहीं है मेरे को टाइम देने के लिए, तो क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। ऑल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, बस आर्बिट्रेशन का यूज करते हैं। द बस आर्बिट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन: द सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन, the distributed bus arbitration, and there is another one that is decentralized. Decentralized bus arbitration. The centralized bus arbitration is a single bus arbiter perform the required arbitration.
सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन में एक छोटा सा सिंपल कह सकते हैं कि एक बंदा होगा, एक बस मास्टर होगा या एक बस कंट्रोलर होगा जो सारे के सारे आर्बिट्रेशन को परफॉर्म कर रहा होगा। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड की अगर मैं बात करता हूं तो डिसेंट्रलाइज्ड में अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वी एक्सेस द बस मास्टर। अब डिसेंट्रलाइज को मैं पार्ट क्यों नहीं मानता बस आर्बिट्रेशन का? जस्ट बिकॉज अगर मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टास्क को डिफाइन करने लगूं, टास्क देने लगूं, तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बट जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको रिस्पॉन्स कभी मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए और सबके सब कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे से, लेकिन अगर मैंने उनको सारी प्रायोरिटी दे रखी है और मैं उन सबको अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी ट्रीट करने लगूं, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी का स्टूडेंट होगा मैं उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। दैट इज वाई वी कैन नॉट कंसीडर द डिसेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन में क्या है? यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, वो एक एक जने को उसको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स देता चला जा रहा है। अगर we are talking about distributed bus arbitration, तो all devices participate in the selection of the next bus master। यहां पे सारे के सारे बस मास्टर इंडिविजुअली रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे जैसे रिक्वेस्ट फुलफिल होती है वो आगे काम बढ़ता जाता है। नाउ talking about some bus arbitration methods, there are basically in centralized bus architecture, in centralized bus arbitration we have three types of bus arbitration. Number one is daisy chaining, number two is polling or rotating priority method, and number three is fixed priority or independent request method. Let's talk about number one, daisy chaining. In daisy chaining there is one controller and number of masters, master 1, master 2, master n, and so on. There are a lot of many masters. The bus controller have three things. We have bus system. This is bus system. And we know that the bus system consisting of control bus, address bus, and data bus. These three types of bus we have in bus system. Here, this is a bus system. This particular thing is a bus system. In this particular daisy chaining, as the name suggested, we have give the chain. We have give request and response in a chaining effect method. Like यहां पे तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बस ग्रांट, बस रिक्वेस्ट एंड बस बिजी। मास्टर वन क्या कर रहा है? सबसे पहले उसने एक रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद वो सबसे पहले क्या देखेगा? वो देखेगा कि बस बिजी है कि नहीं है। अगर बस बिजी नहीं है तो क्या होगा? बस उसको क्या कर देगी? ग्रांट कर देगी, ये अपना काम करना स्टार्ट करेगा। देन आफ्टर दैट मास्टर 2 विल एग्जीक्यूट देयर प्रोसेसेस, then after that master n will execute their processes. In chaining effect we saw that whatever the priority of these masters, we only execute the process one after another. In this, controller only gives the command to the master 1 first, then master 2, then master 3 and so on. कि कंट्रोलर अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस वो चीजों को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेट्स सपोज कि अगर मास्टर एन ने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी, बट वी कैन नॉट गिव द कंट्रोलर टू द मास्टर 1, वी हैव टू गिव द फर्स्ट कंट्रोलर टू द मास्टर 1. If master want the device, want the controller, then it will take it. If he don't want to take the controller, he just move forward and give the grant permission to the master 2.
And if master 2 wants it, then it takes it. If it does not want, then it will go forward to the master 3 and so on. And at last, master n will get the grant permission to execute their request. In this particular type of arbitration method, that is daisy chaining, the advantage is like cheaper and simple. Let's suppose just saw this particular diagram. You can see that how simple it is made. We just put two bus lines, that is the address bus, the control, the data bus, and the control bus will be connected to all the masters in serial. That is why it is cheaper and simple. The second advantage is least number of lines. Here we use least number of lines to connect the masters to the controller by using a system bus. The main disadvantage of this particular arbitration method is slow arbitration time. Why? Just because if master n wants the arbitration, wants the control, then the whole department, whole area will considered. उसको अगर रिक्वेस्ट चाहिए ना, तो वो सबसे पहले मास्टर 1 के पास जाएगा, फिर मास्टर 2 के पास, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5 एंड देन सो ऑन, वो मास्टर एंड तक पहुंचेगा. दैट इज व्हाई इट हैज स्लो आर्बिट्रेशन टाइम. प्रायोरिटी डिपेंड्स अपॉन फिजिकल लोकेशन. यहां पे मास्टर्स की प्रायोरिटी उनकी लोकेशन पे डिपेंड कर रही है कि भाई उसकी लोकेशन क्या है. अगर उसकी लोकेशन कोई दूर की हुई तो क्या होगा, प्रायोरिटी उससे लो हो जाएगी. दिस इज द डिसएडवांटेज. And the chance of failure is more. Chance of failure is more is like, अगर यहां पे किसी को भी कोई भी एक बंदा फेल होता है तो क्या होगा, पूरा का पूरा बस मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. मास्टर एन को रिक्वेस्ट चाहिए थी, मास्टर 1 फेल हो गया, उसके पास रिक्वेस्ट पहुंचेगी कैसे भाई. So this is the first arbitration method, that is called a daisy chaining. Then move forward. The next one is polling or rotating priority method. As the name suggests, we have to poll the masters. In this, these lines are known as address bus or lines. These three are the module or address registers. यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंट्रोलर जो है, या जिसको हम बस आर्बिटर भी बोल सकते हैं, कंट्रोलर कर क्या रहा है, कंट्रोलर सीधे तौर पर हर एक मास्टर को एक आईडी प्रोवाइड कर देता है. when the controller generates the ID to each and every master, it all depends on the priority. Generate priority given by the controller. The whole process will be executed according to the controller. The controller gives the ID to the masters, and according to the ID, the masters will execute their request. If master 1 gives the request, the bus busy, that is the bus area, this area is empty, and the priority of master 1 is highest, then it will execute their request. If master 1 has the highest priority than the master 2 and bus busy is free, then the master 1 will execute its first execute their priority, execute their request. In this particular bus arbitration method, the advantage is fast arbitration. As you've seen that according to the these address buses, just because of this address bus, the arbitration of this particular method is fast. It is simple, less chance of failure. There is very less chance of failure. But what are the disadvantage? The disadvantage is increasing the size will require more number of address line. As we increase the size of the master,
as we increase the devices, the number of lines, the number of address lines, we have to increase it also. एक नॉर्मल से एग्जाम्पल से हम बात करते हैं डेजी चेनिंग मेथड की और पोलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड की. डेजी चेनिंग मेथड की अगर बात करता हूं, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं. लेट सपोज देयर इज अ शॉप इन योर नियर बाय एरिया, ठीक है, और आप वहां पे कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं. इफ दैट शॉप यूजेस डेजी चेनिंग मेथड, सो it will give the data only to the first house, यानी कि सिर्फ उसी हाउस को वो डेटा देगी जो सबसे पहले आता होगा, देन उसके बाद दूसरा को जो होगा उसको मिलेगा, देन फॉरवर्डली मिलेगा. बट अगर मैं पोलिंग मेथड का यूज कर रहा हूं इन दैट पर्टिकुलर शॉप, देन शॉप ओनर विल गिव द टोकन टू द different house owners. And according to the given token, it will generate the response. Are you getting my point? Now, let's forward to the next particular slide or next particular thing, that is fixed priority or independent request method. As the name suggests, there is a fixed priority given to the masters, or we can say that all the masters are acting as independent. So what is done on this particular thing? As you see, the master 1, the master 2 and master n will generate the bus grant or bus request. Each and every master generates the request by its own self, but the busy bus line is common to all. Master 1 generates the request, master 2 generates the request, master n generates the request, and controller gives the response to only that particular masters whose request is first in the priority, who generates the request first. Again, go to the example of shopkeeper. वहां पे हम सामान लेने जा रहे हैं, एक क्यू लग रही है, सबसे पहले जो खड़ा होगा उसको पहले रिस्पॉन्स मिलेगा. जैसे उसका काम खत्म हुआ, दूसरे वाले ने अपनी रिक्वेस्ट, जो भी आ रहा है अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करके बैठा हुआ है कि मेरे को ये चीज सामान चाहिए, ठीक है. बट जो कंट्रोलर है, यानी कि जो शॉपकीपर है, वो आपको रिस्पॉन्स कब देगा? जब उसकी बस बिजी वाली लाइन क्या होगी? खाली होगी. जैसी वो खाली हुई, आपने रिक्वेस्ट जनरेट कर रखी है, आपको प्रायोरिटी मिली, आपका काम शुरू हो गया. सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज वेरी फास्ट आर्बिट्रेशन. Why? क्योंकि यहां पे सब लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. वेरी लेस चांस ऑफ फेलियर, होने का चांस ही नहीं बनता है, बहुत कम चांसेस है कि फेलियर हो जाए. फेलियर किस केस में होगा? कि यू आर द लास्ट वन टू जनरेट द request and there is no particular thing to fulfill your requirement, then in that case the failure chance will be increased. But what are the disadvantage of this particular method? It is cost is high. Why? You can see that how much amount of lines or the wires are used in this particular arbitration method. Chance of starvation. What is the chance of starvation? It is basically like that if master 2 and master 1 generate the request, and at the time of generating the request, the bus busy is fulfilling the request of master n, then at that point the chance of starvation will increase. Thank you. That's all from my side. Jai Hind.